Assalamu alaikum. Continuing with the lectures of entrepreneurial marketing and entrepreneurship. Today we will study the business plan creating and starting the venture. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस प्लान चीज क्या है, बिजनेस प्लान क्यों एक बेसिक चीज है किसी न्यू वेंचर को क्रिएट करने में और स्टार्ट करने में, और इसका क्या इम्पोर्टेंट फीचर है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। इस सारे चैप्टर के अंदर जो है हम इस चीज को स्टडी करेंगे और इस बिजनेस प्लान को लिखने के लिए एक अच्छा बिजनेस प्लान लिखें तो किस तरह से उसका इफेक्ट होगा एक इफेक्टिव वेंचर की क्रिएशन और उसके स्टार्टिंग के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू दिस चैप्टर। प्लानिंग एज पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी आप बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे, कोई भी आप न्यू वेंचर स्टार्ट करने लगे, प्लानिंग उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है उसके सब के सब स्टार्ट को, प्रोसेस को, एंड को, मार्केटिंग को, उसकी आउटकम को, फीडबैक को, कंट्रोल को, हर चीज को, उसके हर स्टेप को, आपके प्रोजेक्ट के या आपका जो भी वेंचर आप स्टार्ट करने वाले हैं उसके ईच एंड एवरी स्टेप को आप जो है प्रॉपरली स्टडी करें और आप प्लान करें कि हाउ वन स्टेप विल एंड इनटू द अदर स्टेप एंड हाउ द अदर स्टेप विल एंड इनटू another step and how this process is going to end, how are we going to collect the feedback of the process, how are we going to implement that feedback into our operational process again, how are we going to improve our product. So you are going to plan each and everything. Once you have planned each and everything in an effective manner, there are so many chances and so many good chances of a good business plan or a good business venture. So let's see what is the importance of plan. Plans provide guidance and structure in rapidly changing market environment. Once you have devised good plan, that plan is going to guide you. That plan is going to tell you or structure your moves into the rapidly changing environment. Since the market environment is changing rapidly, new trends are coming, consumer technology is shifting, consumer is not satisfied on one product, the consumer needs improvement day by day, and consumer wants to see their favorite brands update with the environment, update with the technological changings. So you have to plan your things accordingly because that plan is going to provide you the guidance, that plan is going to provide you a layout of your operations. Plans get finalized as the entrepreneur has a better sense of the market, the product or services, the management team and the financial needs of the venture. Plans जो है आपके with the time being या with the passage of time they get finalized or they get refiner once the entrepreneur or the manager gets the better sense of the market. When you come to the market you do not have that sense of the market or you do not have that सेंस कि किस तरह से उसके जो है वो दाव पेच हैं, किस तरह से उसकी टेक्निकलिटीज हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव किस तरह. सो वंस यू गेट यूज टू द मार्केट, वंस यू गेट द बेटर सेंस ऑफ द मार्केट, दैट हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क, हाउ द कंज्यूमर इज गोइंग टू work, how the management team is going to shift and management team is going to adjust according to the environment, your plans start getting refiner. They help meet short-term and long-term business goals. Once you plan the things accordingly and you make a very nice layout of the things you want to or the goals you want to achieve or your business wants to achieve, this plan helps you or helps the organization to meet its short-term or long-term business goals. So writing down everything and providing yourself a layout of what you want to do or about your challenges, about your goals, it can provide you further guidance and it can avoid any haphazard situation in the future. What is a business plan? Now let's study what is a business plan actually and what its definition is. Dictionary definition or literary definition. A written document describing all relevant internal and external elements and strategies for starting a new venture. It's very simple. A business plan is a written document which describes all the relevant internal and external elements and strategies for starting a new venture. So, a business plan is actually a document in which you write all the elements and about the internal environment, about the external environment, about the consumer analysis, about the market analysis, about your company analysis, and how are you going to
start a new venture, and which strategies are you going to use to start the new venture, and what strategies you are going to use to make that venture successful. It is an integration of functional plans, addresses short-term and long-term decision making for the first 3 years of operation. Let's suppose for the first 3 years of operation, there are long-term business plans also, which can extend beyond the 3 years. So, business plan is integration of functional plans, which means it is a unified form of small plans, and these plans consist of both short-term and long-term decision-making plans, and this is the integration of all the short-term, long-term plans, and it is directed towards your final goal or the final motive you want to achieve. Who should write the plan? Who should be actually the key person who should be writing up the plan? The plan should be prepared by the entrepreneur or the manager in consultation with other sources. The business plan should be written by the entrepreneur or the marketing manager or the entrepreneurial marketer in consultation with other sources. The plan should be prepared by the person himself who is actually interested in doing something new, either related to the product, either related to the marketing, either related to some other practices, and he should write that plan with the consultation of other sources like professionals. He should consult with other academicians. He should consult with other industrialists. So he should write that plan. He should actually merge his own ideas with the ideas or the advices of the other consultants. The entrepreneur should make an objective assessment of his or her own skills before deciding to hire a consultant. The entrepreneur should make an objective. The entrepreneur should assess his own skills, and afterwards he should hire the consultant. So he should not actually accept each and every word which the consultant is providing him with, but he should also critically analyze that consultation or that advice with his own skill, and he should objectively assess his skill also before consulting anyone. Scope and value of the business plan and who reads the plan. Who is expected to read the plan can often affect its actual content and focus. One person who is going to actually read the plan is you yourself, because you are the writer, but there are other persons, like for instance there are investors, there are lenders, there are other sources who are going to read your plan. So whoever is the next focal person who is going to read that plan, it actually affects the actual content and actual focus of the plan, and the write up and the expression of the plan really depends upon the next person whoever is reading the plan. So whenever preparing the plan or writing up the plan, the one should consider the entrepreneur's perspective, which means one's own perspective, marketing perspective, that how the consumer are going to assess that plan, and next is investor perspective, the person who is going to lend money to the business. Continuing with the previous slide, depth and detail in the business plan depend on scope, size and scope of the proposed new venture, size of the market, competition and potential growth. कितना डीपली या कितना डिटेल में आप उस बिजनेस प्लान को लिखेंगे, ये डिपेंड करता है कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, और जिन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो ये है कि कितना जो है वो मैग्नीट्यूड में आपका जो वेंचर है वो कितने, क्या वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेटेड है, या एक स्पेसिफिक लोकेलिटी को टारगेटेड है, या वो पूरी नेशन को टारगेटेड है, या इंटरनेशनली टारगेटेड है. तो डिपेंड करता है कि वो क्या उसका साइज और क्या स्कोप है. साइज ऑफ मार्केट विच मीन्स आपकी किन लोगों को टारगेट करें, क्या लिमिटेड लोगों की टारगेट मार्केट है, या क्वाइट बिग नंबर ऑफ पीपल हैं जो उसकी टारगेट मार्केट है, कितने लोग आपके कंपटीशन में हैं. ठीक है, तो जितने भी कंपेटिटर्स होंगे ऑफ कोर्स आप जो है उतने ही डिटेल में वो प्लान को लिख रहे होंगे. और पोटेंशियल ग्रोथ, जितना भी वो आइडिया पोटेंशियल ग्रोथ की पोटेंशियल पोजेस करता है, उसी लिहाज से आप पोटेंशियल पोजेस करता है, उसी लिहाज से आप उसकी डिटेल्स को जॉट डाउन करेंगे, इसलिए कि जितनी पोटेंशियल पोजेस करता है उतनी ही आपको उस आइडिया की इंपॉर्टेंस को उजागर करने की जो है वो जरूरत होगी. Now in continuation,
of who reads the plan? The business plan is valuable because business plan की value है. क्यों? आखिर क्यों ये वैल्यू है, देखते हैं कि क्यों. हेल्प्स डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर. ये आपको वेंचर की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है. वंस यू राइट द प्लान, your own mind gets clearer and clearer that either your venture or either your new project or either your new campaign is viable enough or not. Guides the entrepreneur in organizing and planning activities. The plan is going to guide the entrepreneur himself that how he's going to organize the activities, how he's going to plan the activity. So once you start writing something in a structured form, your brain also start working in that structured form. तो जब आप उस structured form में अपने आपका brain flow करना start कर जाता है तो आपके जो है वो न्यू आइडियाज की भी जो है फ्लो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है. तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस स्टेप को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कितनी वाइबिलिटी है इसकी, अगर नहीं है तो हाउ यू गोइंग टू मेक इट वाइबल. सो योर माइंड इज गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रक्चरली. सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट टूल इन ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग. सिंस आपको कोई इन्वेस्टर की या लेंडर की जरूरत होगी तो आप जितना आप एक फाइन बिजनेस प्लान को क्रिएट करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छी फाइनेंस के चांसेस होंगे. This process provides self-assessment by the entrepreneur. How do potential lenders and investors evaluate the plan? So, जो potential lenders हैं and investors हैं, which means जिन्होंने पैसा देना है या invest करना है आपके business में, उनका क्या तरीका कार होता है आपके business plan को evaluate करने का. The business plan must reflect. आपने प्रपोजल को या अपने प्लान को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए. आपके बिजनेस प्लान में स्ट्रेंथ मौजूद होनी चाहिए कि इस आइडिया की स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरह से उसको कितना स्ट्रांगली मैनेज करेंगे और कितने जो है स्ट्रांग स्किल्ड पर्सनल्स जो है आप इसमें लेकर आएंगे. प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर होना चाहिए और अवेलेबल रिसोर्सेज, विच एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू इन योर हैंड, उनकी जो है वो क्वाइट जिसे कहते हैं इन डेप्थ डिटेल मौजूद होनी चाहिए. लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन वेंचर्स एबिलिटी टू पे बैक द डेट. लेंडर जो है वो जो वेंचर है उसकी ये एबिलिटी देखते हैं कि उस आइडिया में कितने जो है पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं. जितने ग्रोथ के चांसेस होंगे उतने ही वो अब उनके पेबैक डेट के पेबैक होने के चांसेस होंगे. और जितना जो है ऐसा आइडिया होगा जिसके अंदर ये दम मौजूद होगा कि वो चल जाएगा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, लोग उस चीज को बाय करेंगे, तो वो उसी आइडिया को जो है वो ज्यादा प्रमोट करेंगे. बैंक्स वांट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क. बैंक्स भी आपकी अगर फाइनेंस करते हैं या आपको लोन देते हैं तो आपके बिजनेस प्लान की फिगर्स के अंदर या क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है वो फिजिबिलिटी मांगते हैं. इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली वेंचर कैपिटलिस्ट हैव डिफरेंट नीड्स. जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो प्लान को जरा डिफरेंटली असेस करते हैं. दे प्लेस मोर एम्फोसिस ऑन एंटरप्रेन्योर्स कैरेक्टर. एंटरप्रेन्योर की अपनी डिटर्मिनेशन को, कॉन्फिडेंस को जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ज्यादा देखते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि न्यू वेंचर्स को जो है कैपिटलाइज करते हैं या उनको फंड करते हैं. स्पेंड मोर टाइम कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक्स. वो जो एंटरप्रेन्योर है या जो मैनेजर है जो कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक न्यू आइडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि वो उसका जो है बैकग्राउंड कितना कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग है, कितना डिटर्मिन्ड है वो शख्स, कितना कॉन्फिडेंट है. डिमांड हाई रेट्स ऑफ रिटर्न एंड फोकस ऑन मार्केट एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस. प्रेजेंटिंग द प्लान. द एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टेड टू सेल द बिजनेस कॉन्सेप्ट. जब एंटरप्रेन्योर अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा होगा तो वो एक प्लान जो है उस वक्त उसका एक प्रोडक्ट होगा और वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा. तो उसको अपनी प्रेजेंटेशन में किन चीजों के ऊपर जो है फोकस करना होगा. उसको फोकस करना होगा कि ये प्लान किस तरह से एक गुड अपॉर्चुनिटी है. हाउ इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम, सेल्स एंड प्रॉफिट्स. He should provide an overview about the marketing program, about the sales and profits and return program, and he should also address what risks are associated with that business plan and what plans he have to overcome those risks. Audience include potential investors who may raise questions. Potential investors and lenders are all obviously going to raise questions because they have the maximum stake in that as they are going to spend the money. So while presenting the plan, the entrepreneur has to prepare all the answers to the expected
questions. This is all for now from this chapter. We will continue this chapter in other lectures. So thank you so much till now. If you have any questions, you can ask. Thank you so much.